So this call is being recorded, and we'll start with the presentation again. So, so we discussed about how we are going to test for a conflict serializability using that graph method, or the precedence graph method. But that precedence graph method, it can not be used with for testing of view serializability, because it is generally an NP complete problems, and the existence of algorithm for this is extremely unlikely to happen. So we'll do another method which can be used to test whether a given schedule is serializable or not. So any schedule is a view serializable schedule if it is view equivalent to any serial schedule. That is what we have to prove. So if I have been given a schedule, and I want to prove whether the given schedule is a view serializable schedule or not. So what I do, I find out all the possible serial schedules and prove that at least one of them, one of those serial schedules are view equivalent to the given schedule. So if I prove that one of these serial schedules are view equivalent to the given schedule, obviously the given schedule will be a serializable view serializable schedule. If I don't find any of the possible serial schedules to be view equivalent to the given, so we can say that the given schedule is non view serializable schedule, so it cannot be view serialized. So uh, we have to go with the definition. So if we say a view serializable schedule is the schedule which is equivalent to any serial schedule, so we have to prove that, and we'll see the method by using a example of that. So we'll take one example. So what I do, I take one example that we are given a schedule S. So this is the schedule S given. So this is the schedule S given, एंड इट हैज दीज ट्रांजेक्शन. एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कहीं पे आपको जो शेड्यूल होगा वो इस टेबुलर मेथड में दिया होगा, और कहीं पे इस स्टेटमेंट मेथड में दिया होगा. इसको टेबुलर मेथड में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, इट इज वेरी सिंपल. जस्ट सी, every schedule will be a sequence of some instructions. So these are the instructions: r2b, r2a, r1a. They are all instructions, and the ordering of these instructions shows the chronological ordering of execution sequences of this instruction. तो जिस ऑर्डर में दिए हैं उसी ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हो रहा है. जो इंस्ट्रक्शन का नाम है, इफ इट इज आर, दैट मीन्स इट इज अ रीड इंस्ट्रक्शन, and the number ahead shows the transaction number to which that instruction belongs, and the bracket content is the data item on which that instruction is executing. So r2b simply means it is a read statement of transaction t2, which is reading the data item b, and this is the sequence. So first instruction executed will be r2b, second will be r2a, and so on. So we can make like this. So if you see how we are going to decide how many transactions are in the given sequence, so highest subscript, this number, if you see, there is a number 3 in read statement, there is a number 3 here. That means the total number of transactions participating in the given instruction are 3. So we'll take t1, t2, and T3 as the participating transactions in the given schedule. And then what you have to do is we have to write down all this. So R2B belongs to T2, and it is the first instruction. So in the first row, that means it is execution sequence, execution number 1, then second, then third, then fourth, then fifth, then sixth, and then seventh. So the first instruction to be executed is read instruction of transaction 2 to T2 on data item B. So I have written read to B here. The second instruction is again a read of transaction T2 on data item A. So second instruction to be executed is this. So the third instruction is R1A. So it will be going to T1 as a third instruction here. Then fourth one is R3A. So it is R3A here. Then fifth one is W1B. So W1B, then W2B, and W3B. So this is how we are going to convert a given sequence of instructions given like this into tabular form, if you are trying to.
So more you practice, you will be able to solve all this using this only. But I would recommend that if you are given such type of representation, just convert it, because it will means eliminate all the possibilities of errors you can make. So always convert it to a tabular form and then try to solve the questions. So now this is how we have converted, and this is the schedule t1. So t2 instructions are there, first two instruction, then t1 one instruction, then t3 ka one instruction, then t1 again, t2 and t3. So this is how the schedule is being executed. So what I need to do is I need to test whether this given schedule is a view serializable schedule or not. So what I do, इट इज सिंपल, जो एल्गोरिथम है और सिंपल मेथड जो है इसको सॉल्व करने का, वो कि जितने भी ट्रांजेक्शन दिए हैं उनके सारे पॉसिबल सीरियल शेड्यूल्स निकाल लो. So how it is? So if there are three transactions, so number of schedules possible which are serial in nature will be three permutation, that is 6. So it will be T1 then followed by T2, T3. Keep the fix the position of T1, then T3 and T2. This is how we can write all the possible combinations. पहले T1 ले लिया, बाकी दोनों को एक बार एक सीक्वेंस में, दूसरी बार दूसरे से. Then T2 and then again दो बचे हुए उनको दोनों सीक्वेंस में. Then T3 then again दो बचे हुए. So these are the all possible serial schedules which can be created using the given three transactions. So all instructions of T1 followed by T2 then followed by T3 and so on. So this is how we can create all the possible schedule, and how we are going to test. So we have to follow three steps: step 1, step 2 and step 3. So in step 1 we will find updation on data items. डेटा आइटम के ऊपर, हर एक डेटा आइटम के ऊपर किस ट्रांजेक्शन ने फाइनल अपडेशन किया हुआ है. सो फाइनल राइट ऑपरेशन किसने किया हुआ है, दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. देन द सेकंड स्टेप वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हर एक डेटा आइटम पे इनिशियल रीड किसने करा है, और उस पे उस रीड के आफ्टर राइट उस रीड के आफ्टर रीड किसने करा हुआ है. ठीक है ना. तो इनिशियल रीड किसने करा है, एंड हु एल्स हैज रेड द value after this read operation. This sequence we have to mind. And then step 3 we have to decide for each data item which is the transaction which has written the final read sequence, so write sequence. So in this case, if you see, so we are having 6 possible serial schedules, and we have to try to eliminate all the serial schedules which are not equivalent to the given schedule using these three steps. So every step will be reducing some of these attributes which are not valid as sequences. So in this case, the first step what I do, I find the updation on data item. So if you look at this table, so on data item A, the final updation, so first data item जो भी है A के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो there is no write operation on A, therefore none of the transactions they are making any updation to the data item, and that's why in this A के अगेंस्ट कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जो अपडेशन ऑपरेशन कर रहा हो. सो राइट सीक्वेंस नहीं है, राइट ए कहीं भी नहीं है, इसलिए ए ब्लैंक रहेगा. देन व्हाट आई डू, आई टेक बी. सो वी हैव टू कंसीडर ईच ऑफ द डेटा आइटम लिस्टेड. जितने भी डेटा आइटम पे काम हो रहा है हर एक को एक एक करके देखना है. सो इफ यू सी बी हियर, तो बी के ऊपर सबसे पहले राइट ऑपरेशन T1 ने किया है, फिर दूसरा T2 ने किया है, फिर तीसरा T3 ने करा है. ठीक है ना. सो व्हाट आई डू, आई राइट दैट बी के ऊपर फर्स्ट T1 देन T2 देन T3. दिस इज द फाइनल राइट ऑपरेशन. यानी कि बी के ऊपर फाइनल राइट ऑपरेशन किसने करा, T3 ने करा. ठीक है. तो अगर कोई वैलिड सीक्वेंस है इसके अंदर जो सीरियल शेड्यूल है और उसके इक्विवेलेंट होगा, तो ऑब्वियसली चूंकि फाइनल राइट, व्यू serializability क्या कहता है, हर डेटा आइटम के ऊपर जिसने भी फाइनल राइट ऑपरेशन किया है शेड्यूल S1 के अंदर, वही उसी ने फाइनल राइट ऑपरेशन किया होना चाहिए शेड्यूल S2 के अंदर. सो यहाँ पे अगर इनमें से कोई इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल हो सकता है तो केवल वो हो सकता है जिसमें लास्ट में T3 आ रहा है. ठीक है ना. सो अगर फाइनल बी के ऊपर जो अपडेशन हो रहा है वो T3 के थ्रू हो रहा है, तो इक्विवेलेंट शेड्यूल के अंदर भी T3 के थ्रू होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ, we can have any combination of T1 T2 but at the end we should be having T3 only. तो इसमें से जितने ऐसे
कॉम्बिनेशंस हैं ऊपर वाले सीरियल शेड्यूल में से जिसमें लास्ट में T3 नहीं आ रहा है, उसको हम हटा देंगे। तो ये देखो, ये वाला हट जाएगा बिकॉज यहाँ पे लास्ट में T1 आ रहा है, ये हट जाएगा, यहाँ पे लास्ट में T2 आ रहा है, ये हट जाएगा, इसमें लास्ट में T1 आ रहा है, यहाँ भी लास्ट में T2 आ रहा है। तो अब मेरे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे उसमें से केवल दो कॉम्बिनेशन बच गए जो वैलिड हो सकते हैं। इसलिए जो रिमेनिंग शेड्यूल्स बचे वो कौन कौन से बचे, T1 T2 T3 एंड T2 T1 T3। सो दीज आर द वैलिड। अब इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। सो एट द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट दिस सीक्वेंस। हर एक डेटा आइटम के ऊपर इनिशियल रीड किसने करा है और उसके बाद और कौन कौन से ट्रांजेक्शन ने रीड ऑपरेशन किया है। तो अगर आप इस टेबल को देखोगे तो ए के ऊपर सबसे पहला रीड ऑपरेशन किसने करा है, T2 ने करा है। सो आई हैव रिटन दैट ए के ऊपर सबसे पहला रीड ऑपरेशन T2 ने करा है। इस रीड ऑपरेशन के बाद T1 ने भी रीड करा है और T3 ने भी रीड करा है। तो इस जिसके बाद इसके जस्ट बाद कौन है, T1 है। तो मैंने T1 लिख दिया यहाँ पे। सो T1 हैज रेड एंड देन फाइनली T3 हैज रेड, तो आई हैव रिटन T3 हियर आल्सो। ठीक है। ऐसे ही बी डेटा आइटम के ऊपर अगर देखोगे तो बी डेटा आइटम के ऊपर भी फर्स्ट रीड ऑपरेशन किसने करा है, T2 ने करा है। ठीक है। और उसके बाद जो जिसने भी रीड ऑपरेशन करा है, जिसने उसको रीड करा है, फर्स्ट रीड ऑपरेशन, सॉरी अपडेट जिसने करा है। सो इस रीड के बाद किसने अपडेट करा है, यानी कि जिसने राइट ऑपरेशन करा है। तो आफ्टर दिस रीड द फर्स्ट राइट ऑपरेशन इज बीइंग डन बाय T1। सो ये सीक्वेंस और आ गया हमारा T1। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए के ऊपर पहला रीड ऑपरेशन T2 ने करा है, तो यहां भी पहला रीड ऑपरेशन T2 को करना चाहिए। द ट्रांजेक्शन T2 रीड्स B इनिशियली विच इज अपडेटेड बाय T1। तो अब B के ऊपर T2 रीड करता है और उसको अपडेट कौन कर रहा है, T1। तो ये हमेशा सीक्वेंस मेंटेन होना चाहिए। ऐसा होगा कि अगर हम T1 को पहले कर देंगे तो व्हाट विल हैपन, T2 will read a value which is being updated by T1, but T2 should read the value before updation done by T1। इसलिए ये सीक्वेंस हमारा मेंटेन होना चाहिए। यानी कि अब जो है उसमें ये भी मेंटेन होना चाहिए, यानी कि लास्ट में T3 आए लेकिन T2 और T1 की सीक्वेंस ये होनी चाहिए। तो अब देखो जो भी शेड्यूल बचे हुए थे दोनों में से, तो यहाँ पे T1 T2 है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर द ओनली पॉसिबल शेड्यूल इज T2 T1 एंड T3। तो ये हमारा T2 T1 और T3 है। राइट रीड सीक्वेंस हमें चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब यहाँ पे कुछ है नहीं, कोई राइट रीड सीक्वेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि एक बार राइट होने के बाद कोई और रीड नहीं कर रहा है। तो देर इज नो रीड आफ्टर राइट। यहाँ पे राइट के बाद राइट है, राइट के बाद राइट है और राइट के बाद राइट है। ठीक है। तो हमने पहले वाला इंश्योर कर दिया कि लास्ट राइट ऑपरेशन जिसने करा था उसने यहाँ भी किया हुआ है, फर्स्ट रीड ऑपरेशन जिसने करा था वहां भी उसने किया है, और रीड राइट का सीक्वेंस भी मेंटेन्ड है। यानी कि ये शेड्यूल जो है ये एक सीरियल शेड्यूल है और दिस शेड्यूल इज इक्विवेलेंट टू गिवन शेड्यूल। And now, since I have found the equivalent schedule which is serial to the given schedule, therefore I can write that the given schedule is a view serializable schedule। इतना क्लियर है? Yes, sir. Any problem, anybody? Sir. Okay. So this we have discussed already, recoverable and cascadeless schedules. The next thing which we have to discuss is the concurrency control. ठीक है। So what is a database must provide mechanism which will ensure that all possible schedules are either conflict or view serializable schedule, are recoverable and preferably cascadeless schedule. So every database system must provide sufficient mechanism which ensures these two points. The first one is जो भी शेड्यूल बनना चाहिए वो या तो कॉन्फ्लिक्ट serializable हो जाए या व्यू serializable हो, दोनों में से कोई भी हो जाए, एटलीस्ट एक होना चाहिए। एंड देन रिकवरेबल शेड्यूल्स होने चाहिए और अगर पॉसिबल है तो कास्केडलेस भी होने चाहिए। ठीक है ना। नाउ अ पॉलिसी इन विच ओनली वन ट्रांजेक्शन कैन, अब इजिएस्ट मेथड क्या है कि हम एक ट्रांजेक्शन को अलाउ करें, बाकी सारे वेट करते रहें, जब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए
तब अगला ट्रांजेक्शन आए, और उसके बाद ये कंप्लीट आ जाए तो अगला ट्रांजेक्शन आए, यानी कि एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते वक्त किसी और ट्रांजेक्शन को हम अलाउ ना करें। ये क्या करेगा, ये हमेशा सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करेगा, क्योंकि जो भी शेड्यूल एग्जीक्यूट होगा वो हमेशा सीरियल शेड्यूल होगा। ठीक है ना। अब ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर गिवन सीरियल शेड्यूल इट इज रिकवरेबल और नॉट। सो वी हैव टू डिसाइड वेदर, अगर मेरे पास ऐसा कुछ है T1 देन फॉलोड बाय T2 एंड देन फॉलोड बाय T3, तो क्या ये शेड्यूल, अगर ये सीरियल शेड्यूल है, तो क्या ये रिकवरेबल होगा कि नहीं? कैन एनीबडी आंसर वेदर सच टाइप ऑफ शेड्यूल इज रिकवरेबल और नॉट? सर इसमें डेटा सेव थोड़ी हो रहा होगा अगर। नहीं, ऑब्वियसली हो रहा होगा, क्यों नहीं हो रहा होगा? तो फिर सर हो सकता है फिर। तो इट कैन बी रिकवरेबल, इट कैन नॉट बी रिकवरेबल। अगर इसका कमिट ऑपरेशन इसके कमिट ऑपरेशन से पहले आ गया और ये बीच में फेल हो गया, तो हम इसको रोल बैक नहीं कर सकते। ठीक है ना। सो इट इज नॉट रिकवरेबल। सो वी हैव टू इंश्योर कि कोई भी सीरियल शेड्यूल तभी होगा जब इनके आपस के T1, अगर इसने राइट किया है, उसने रीड करा है, तो इसका कमिट ऑपरेशन इसके बाद आना चाहिए। अगर इसने रीड करा है, इसने राइट करा है, तो इसका कमिट ऑपरेशन इसके बाद आना चाहिए, ये इंश्योर करना पड़ेगा। ठीक है ना। दैट वी हैव टू, यू हैव टू एनालाइज वेदर द गिवन सीरियल शेड्यूल्स दे आर रिकवरेबल और कास्केडलेस और नॉट। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं सीरियल शेड्यूल एग्जीक्यूट करता हूं, तो एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होते ही हम तब तक कंप्लीट करेंगे जब तक वो कमिट ना कर जाए। तो जब ट्रांजेक्शन कमिट होगा, दैट मीन्स वो उसने कमिट ऑलरेडी पहले कर दिया, अब उसके बाद ये रीड कर रहा हो ना कर रहा हो, उसके बाद कोई। सो बाय डिफॉल्ट, if we are ensuring that the transaction once execute started is executed till it's completes, और जब तक ये कमिट नहीं कर जाता है तब तक हम दूसरे ट्रांजेक्शन को अलाउ ना करें, तो वो हमेशा जो शेड्यूल होगा वो सीरियल शेड्यूल होगा, वो रिकवरेबल शेड्यूल होगा, और वो कास्केडलेस शेड्यूल भी होगा। ठीक है ना। सो दैट वी हैव टू डिजाइन। और गोल क्या होना चाहिए, हमें हमेशा कोई भी कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करें, आवर गोल शुड बी दैट whatever be is being executed, it should be a serializable schedule. Then the same thing is written here, you have to read out, nothing different. Then again, what is the problem? So what is the problem with serializable schedule? They create a lot of overheads. तो इफ आई वांट टू, देयर आर टू मैकेनिज्म, एक तो हम सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करें, उस केस में हमें सीरियलाइजेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एवरी टाइम वी हैव टू टेस्ट कि वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल हो रहा है कि नहीं ग्राफ मेथड से, या हमें व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। और ये टेस्टिंग एल्गोरिथम्स दे क्रिएट अ लॉट ऑफ ओवरहेड। तो यहाँ पे अनदर मेथड इज टू यूज कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म और कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। नाउ व्हाट डज कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स डू? दे अलाउ कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ शेड्यूल्स। वो सीरियल नहीं बनाने की कोशिश करते हैं, वो कंकरेंट एग्जीक्यूशन अलाउ तो करते हैं, बट दे एंश्योर दैट शेड्यूल्स आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड सच दैट दे आर कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू सीरियलाइजेबल इन नेचर, दे आर रिकवरेबल एंड दे आर कास्केडलेस। तो वो ऐसे मैकेनिज्म को पहले से देखो, जो हमारी सीरियलाइजेबिलिटी है वो क्या करती है, पहले टेस्ट करती है, अगर सीरियलाइजेबल नहीं हो रहा है तो उसको सीरियलाइजेबल बनाती है। ये क्या करेगा, कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म पहले से ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होते ही ये इंश्योर करना शुरू कर देते हैं कि जो भी एग्जीक्यूशन होगा हमेशा हमारा सीरियल एग्जीक्यूशन या सीरियलेबल एग्जीक्यूशन ही होगा। सो ये एक तरह से दे एक्ट प्रोएक्टिवली, concurrency control mechanism they act proactively, and serializability test they act after the event has occurred। तो या तो वो रोल बैक करेंगे या अंडू करेंगे, जो भी करेंगे। सो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कंकरेंसी कंट्रोल and a serializability test. So जनरली हम पढ़ते क्यों हैं सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट? इट इज सिंपली यूज टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन एनफोर्स कंकरेंसी कंट्रोल। तो अगर आपको सीरियलाइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, तो while writing the transactions you will always write those transactions such that you are enforcing all the concurrency control mechanism, so that the database is always left into a consistent state. So this is what we'll be discussing about concurrency control in your fifth unit, पांचवें यूनिट में we'll be discussing all these mechanism in very detail। इस यूनिट में अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे इसको। So
And these are another extra things. If you want to read, you can read it out. And ये SQL के अंदर है, just it is for your self reading, it is not in your syllabus, so I'll not cover it back. So this is what is for this topic today. And I think we will end here only. We'll start the new topic, that is recovery from transaction failures, and that will be talking in the next class. So आज एक मिनट